Assalamualaikum ji. This is Dr. Humma Saif. I'm here with my segment FunPlatter. We are here. This segment is all about showing the world, my viewers, the interesting happening aspects of the world, a new perspective through the lens of my guest. So today our guest is Amna Adnan. Welcome to the show, Amna Adnan. Thank you so much, Humma. It's lovely to be with you. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. It's my pleasure, honey. It's totally my pleasure. I'm a great fan of you as well. Oh, thank you. I'm humbled, honey. Just Amna, honey, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ. I know a lot about you, but I want viewers to go on this roller coaster ride with you. Yeah, Humma, thank you so much for inviting me over. Yeah, about me, I was born and raised in Pakistan. Lahore से basically, और education भी, schooling भी, और higher education भी. In fact, start of initial career bhi, shadi bhi, and then of course after shadi moved to Islamabad, another beautiful city. And after Islamabad, I moved to maybe within a few months to Saudi Arabia in Riyadh, and then from Riyadh to Dubai and Dubai to Oman. So just moving all over the Middle East. A lot of places. You actually lived there. I mean, we like vacation is a different story, but actually living there, you know, all the culture, cuisine, you actually get a dip there. So it's like, wow. I have other like traveling adventures when we are living in, in one place. Like let's suppose I was living in Saudi Arabia. So I have explored a lot of other adventures in my life, like exploring desert. Okay, I want to know about more about desert. I mean, we very intriguing factor attached to the desert ke saath. So tell us more about. Believe me, Humma, desert is a beauty in its own. You cannot match that beauty, especially the sound when the sand floats on a road. The road dunes ban jati hain, and especially when you are traveling and the camel crossings and you have to just stop and you have to wait. Let's you pass. Let's pass on this camel. So are there any like जैसे कोई roads वगैरह या कोई जैसे air traffic होती है तो उसका भी कोई imaginary कोई इस तरह का होता है कि camel कहीं से भी आ सकता है आप भी जहाँ मर्जी जा सकते हो in the car? नहीं, हमारे सिटी में ऐसा नहीं है, but when you're doing off-roading, because I love doing off-roading, and in Riyadh we did a lot of off-roading adventures with my husband, and you know we were young at that time and small, get nothing to do, so we just what to do. So holiday, let's go out and explore the city. Let's go out and explore the desert. So desert has a different path, like उसमें आपको cliffs मिलेंगी, आपको red desert मिलेगा proper वाला, और so off-roading पे आप जाते हैं तो जब when you are very away, like 200-300 kilometers away from city, then you can find the camel crossings, because वहाँ पे इनके camel farms हैं, इस तरह हैं, और जहाँ पे वो camels को breed करते हैं, उनको रखते हैं. अच्छा, रियाद में रहते हुए we were lucky कि हमने ऐसे points explore किए at that time. It's like आज से कोई 10 साल पहले शायद गूगल पे पढ़ के और डिफरेंट जगह ढूंढ के कहाँ पे क्या है, let's go and explore the depth of the desert. So we found there like edge of the world. So वहाँ पे we used to go on weekends and more 2 hour drive from Riyadh, and it was in the middle of the desert और बिल्कुल मतलब शहर से बाहर, GPS coordinates नहीं है, and you have to just follow a trail, a rough trail. उस trail के ऊपर आप then you have a chances कि आप अपना रास्ता भूल जाएंगे. And this is what happened with me, because when I was there in Riyadh, there was no concept of women driving. Now it's open, everybody can drive. So I had an opportunity as soon as Riyadh se bahar nikle, 200 back, okay, now you are off, let me drive. So does GPS work there? If you're lost over there, how do you figure out? It's like just keep exploring, like any technology to help you there? We used to use GPS coordinates. हमारे पास app होता था, लेकिन sometimes you know आपके signal नहीं आ रहे फोन के, आप you are lost over there, then you are dependent कि आप क्या करें. Like इसी तरह एक बार हम लोग जा रहे थे, so we just decided to go into the desert. हम वहाँ पे चले गए, चलते गए, in the middle we are lost, and we are stuck in sand. अब sand में से गाड़ी कैसे निकले, because we are not trained enough how to do proper sand duning, और उसके अंदर गाड़ी फंस गई, and I was standing there for
literally 2 hours, 3 hours. May Allah koi help bhej de. Literally, I saw somebody. एक दूर से कोई गाड़ी आ रही थी. One guy came out of his car और उसने टायर में से हवा निकालना शुरू कर दी. और I got scared. मैंने कहा या अल्लाह, एक तुम पहले फंसे हुए ऊपर से हवा भी निकाल रहे हो, मैं क्या करूँ? और मैं क्या तो कुछ और ही मसला. लेकिन literally they helped us out and very helpful. और ये it's more about their culture. I mean, हम तस्वीरों में देखते हैं वो जो उनके बड़े बड़े खाने और वो जो दस्तरखान होते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े प्लेट्स के अंदर सब कुछ लगा होता है. So about their festival. Kapsa, that's the traditional food. That's a lot of rice जिसके अंदर वो full बकरा रोस्ट करके इस तरह का फूड स्ट्रीट वगैरह में मिलते हैं. मुझे इसका नाम इसमें भूल गया, लेकिन वो उसके अंदर स्टफ करके चावल. Exactly. और because वो एक tribal culture है and they still carry it at some level. So वहाँ पे traditional weekend पे अगर आप देखें शहर से बाहर निकले, you will see big cars going on with their luggage in the back. उसके साथ additional trolleys लगी हुई है and they're going deep in desert and they're staying there. They are staying there with family. They are making, cooking, and they are spending there 2-3 days. Camping, bonfire kind of thing. So it's a culture in its own, which really fascinates me. And in a smaller level, you can see that these kind of small little family camps are going on in the city as well. On weekends, especially weekend, have family just pack up their food, get your stuff, going out in the desert, sitting there, doing their salah over there, and spending their good time over there. You know, touching the nature. Nature के साथ वो एक reconnection हो जाता है, and then they come back. So actually, it was a part of our life as well for like 5-6 years. So we explored a lot of desert in that perspective. Okay, that's awesome. और वहाँ के बारे में क्योंकि आपको याद है लैंडकॉम या लॉरियल का कमर्शियल आया था इसमें सहूर के ऊपर बहुत खूबसूरत मेकअप वो दिखाया होता है. एंड वी लाइक हम पाकिस्तान में बहुत मजा आता है. सहूर इज लाइक सहरी टाइम. द पीपल आर लाइक क्योंकि हम पाकिस्तान में तो वो लिटरली वो क्या बाल बिखरे हुए और दैट्स व्हाट सहरी मींस फॉर अस. तो वो क्या था क्योंकि उसके बाद फिर लैंडकॉम में शायद वो एक्सप्लेन लॉरियल था या लैंडकॉम. आई डोंट remember that brand right now किसका था. But yes, this culture is very strong over there. Humma, you know, maybe I'm a fashion addict person, right? But the core, wo jo strength of makeup and, you know, taking care of yourself, maybe I developed more from learning them. The women really dress up so nicely. They wear their beautiful makeup on, their lovely eyes, and you know, because of the niqab. And so I remember I watched a movie Sarah Jessica Parker. उसकी जो movie थी इसमें वो सारा दिखाते हैं दुबई में ख़वातीन वो अबाई के नीचे they're like the best premium brands. Of course, it is. It is a land of brands. You know, you can get world's best brands here in Dubai and Saudi Arabia as well. And you were telling me something about the desert exhibition and the अभी recently they have started art के ऊपर काफी वो प्रमोट कर रहे हैं उसको desert art को. तो अभी अल-उला के नाम से एक जगह है वहाँ पे they are promoting a very big exhibition. I usually see their ads and I hope to go there one more day. Very fine day. I hope I will be able to be part of it. That's a very, very nice exhibition made up of sands, made up of sand art and carving and everything. You know, sand can, when you go, there is a shadows. Right? Sorry? Sculptures or painting? Sculptures made up of sand carving करके. Okay. जो stones होते हैं उनकी carving करके. This is very unique kind of exhibition. They are introducing with the UNESCO के साथ I guess वो कर रहे हैं अभी. मैंने So they are promoting a lot their culture in this sense. As far as adventures are concerned, आप अभी adventures की बात कर रही थी. Adventures में हमने explore किया बहुत ज़्यादा. सऊदी अरबिया में तो एज ऑफ वर्ल्ड जो कि बिल्कुल एक मिडल ऑफ द डेजर्ट में एक रॉकी रेंज है. आप वहाँ पे टॉप पे जाके यू जस्ट क्लाइम अप ओवर देयर और 2-3 hours का वो है. But then in Oman, I love to explore their beaches. They have beautiful, fine beaches in Oman. Even Dubai maybe or Oman maybe, the one thing is very common is their beach. One is a man-made beach and one is a natural beach. Okay?
untouched, away from human contact. Because they are beautiful, especially clean, very beautiful, and very closer to the nature. ऐसा लगता है कि जैसे आप अभी जमीन पे उतरे हैं और Dr. Umar, there is another very interesting adventure which is about my dolphin watching trip. It's in Oman. When you go to the Oman mountains, away from Oman, like 30 kilometers away from the city, they take you in the middle of the ocean, and तकरीबन ocean में 100 kilometer के करीब आगे जाके they will stop your boat for like good 1 hour or so, और फिर उसको float free करते हैं, and then they wait के वहाँ पे live real wild dolphins आती हैं, और वो these they just they come in groups, in very big groups. You can see in my video maybe, okay, they are all around your boat, and they have a lot of interesting events related to those. कुछ लोग कहते हैं they are very friendly with human, these dolphins, or do they give any dolphin swimming with the dolphin option? Because I remember when we went to San Diego, तो उनकी एक option होती है जिसमें आप dolphins के साथ swim कर सकते हो, लेकिन उसकी एक age limit है. Yes, there are a lot of options like that. लेकिन अगर आप properly trained diver हैं, and then you can go deep down, and then you can definitely there are other options as well. लेकिन for normal visitors like us who are not very much trained into diving or उसमें, so then you can just stop there. They will switch off the boat, और वो boat में आप बैठे आराम से, और dolphin will be just traveling in a group around you. और वो it's amazing, it doesn't maybe sound इतना अच्छा नहीं करे, but जब आप real life में उनको देखते हैं, like they are just in groups, or they're making their voices as well, और वो आपकी boat के गिर्द that must be mesmerizing. I can imagine. Amazing. Nature को live देखना, it's itself it's the next level. You cannot describe them. I totally agree. It's an experience. क्योंकि आप सोचिए जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे ना, बीच पे गए और पानी के अंदर जाते जाते और कोई अलार्म कुछ एक्सीडेंट होता है, I used to think why people even try it. लेकिन आप सोचिए हम लोग गए थे फ्लोरिडा के बीच पे, और it was like it pulls you. There's some strange power. जब आप बीच पे जाते हो तो वो समुद्र आपको पुल करता है. बिल्कुल, नेचर की तो आपकी एक अपनी पुल है. Absolutely, and you have to experience it. Exactly, and you have to feel it. It's not like just आप रोड से गुजर रहे हैं, जी मैंने समंदर देख लिया. No, you have to spend time with nature. You have to give a proper due time, and then it will connect with you. It's very soul enrichment. आपके experiences होते हैं. So when you come back to your routine life, you feel like that. You're refreshed again, और आपके अंदर एक boost आया हुआ है वापस. Rejuvenated. You're absolutely right. And tell us more about Oman. Oman is really, really beautiful country in terms of its natural जो heritage उसका है. It's not very much fancy and all that kind of modern stuff. Developed. It is very developed in its own sense, but their core focus about Oman is their nature. They have a very long coastline. Like I think 1200 or 1300 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है, जो ओशन है, जो उसके साथ साथ चलता है, और उसका एक पुराना सिटी है जिसकी एक अपनी कल्चरल वैल्यू है. So कुछ बहुत सी वादीज हैं. Wadi is a valley basically. So Wadi में there's a very famous Wadi. Most of the tourists go there. That's known as Wadi Shab. So we travel there, और वो तकरीबन 2 घंटे की हाइक करके आप, it's not a hike, it's basically between the mountains के अंदर आप जाते हैं, और बिल्कुल like 1 or 2 hours deep down in the mountains you will find some streams going on, और वो natural पानी जो आसपास से आता है. You have to drive or do you have to walk? Walk. It's Muscat से तकरीबन like 1 hour away, and then you have to park your car there. Then you have to walk almost 1 hour in the mountains. Wow. So it's a very deep mountain, or बिल्कुल raw, rough mountain. So you have to be, very prepared to go in. Okay. जी, प्रॉपर लाइट के साथ आप जाएं, और प्रॉपर आपके पास लाइफ जैकेट हो, क्योंकि एकदम पानी आ जाता है वहां पे. फिर
along. We take our life jackets along. But usually whenever we go, हमने 2-3 बार जब भी trip किया, because this is the most, मैं हमेशा I was just looking forward to go there. We always take our life jackets and we plan our trip कि हम morning में निकलें. Like for example, सुबह 8 बजे we should be there. So आप start करें और आप आराम से दिन में वापस आएं. Because once it's night, it's very risky to be there. Okay. Mountains or pani, or it's not advisable to go there at night. So it's best you should plan your trip properly in daytime. So कोई nature life conservation. Yes, in Oman is very famous, and I will really appreciate their government to put special effort in nature preservation. ओमान का कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है इस सेंस में कि वहाँ पे एक बीच है जहाँ पे जिसे हम कहते हैं रासुल फॉर एंड रासुल जेम्स, राइट? स्पेशल बीचेस व्हिच आर फेमस फॉर टर्टल की लाइक रिप्रोडक्शन के लिए. सो टर्टल, बहुत बड़े बड़े टर्टल्स एवरी ईयर वहाँ पे आते हैं, फीमेल टर्टल्स. I saw myself कि one female turtle came and she did one ditch, और फिर उसने दूसरा hole बनाया, and one was a trap. I was surprised. Why is she making 2 holes to lay? तो मैं गाइड से पूछा तो गाइड बोला कि नहीं, this is a nature is that ये 2 dig करेगी, एक ट्रैप होगा और एक में वो एग्स देगी. सो जिसमें उसने एग्स दिए उसको उसने प्रॉपरली कवर करके देन शी वेंट बैक टू ओशन. और दूसरा जो टिप था वो इसलिए कि मॉर्निंग में वहाँ फॉक्स आएगी या कोई भी और प्रेडेटर आएगा जो उसके एग्स को डैमेज करेगा, एंड प्रेडेटर उसके अंदर गिर जाएगा. सो ही वोंट बी एबल टू फाइंड कि किसके अंदर एग्स हैं, किस में एग्स नहीं है. सो वो पूरा बीच लाइक आई थिंक वहाँ पे टर्टल्स थे और वो एग्स दे रहे थे. मतलब आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट कि आप प्रोटेक्टेड, क्योंकि जैसा कि बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं तो वो क्या कि वहाँ पे कोई बड़ी गार्ड और वो कोई स्ट्रिक्ट वो थे और बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इतने बड़े बीच को प्रोटेक्ट करना ह्यूमन कांटेक्ट से, और एनिमल कांटेक्ट तो चले एक नेचर है, ठीक है, ह्यूमन कांटेक्ट मेंटेन करना itself is a problem. So उन्होंने उसको बहुत ऑर्गेनाइज किया हुआ है. You need to get permission, और उन्होंने एक टाइम रखा हुआ है कि because you cannot take tourist every time over there. अगर आप हर दफा टूरिस्ट को लेके जाएंगे टर्टल तो आप क्यों तंग कर रहे हैं, वो आइसोलेशन हो रहा है. क्योंकि आप देखो हम लोग गए थे सैन डिएगो, तो वहाँ का जो जू है तो जो पैंडा वाला वो एंक्लोजर था, तो दे वर लाइक nobody needs to talk, it's for like a single lane जो वो लोग चल रहे थे. और वो क्योंकि वो ऑब्वियसली जो एनिमल लाइफ है वो प्राइवेसी ऑफ एनिमल, so they were very careful about it. उन्होंने टूरिस्ट रखे हुए थे और they just pointed out कि इतने लोग जाएंगे और सिर्फ ये 2 स्लॉट्स होंगे और सिर्फ इन 2 स्लॉट्स में जाएंगे, ठीक है. और इन स्लॉट्स के अलावा वो भी एक स्लॉट बहुत अर्ली मॉर्निंग लाइक 2 or 3 AM in the morning, और एक स्लॉट वाज राइट को 11 and 12. So you are, अगर आप बहुत ही वाकई नेचर से आपको इतना प्यार है और आप इतनी जल्दी उठोगे, फिर आप इतनी जल्दी उठोगे और आप अपने आप को तकलीफ में भी डालोगे और फिर आप वो एफर्ट भी करोगे और फिर आप जाओगे. बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है बस हो जाएगा. आई एग्री. I love ओमान के अगर आप जाएं like जबल जैस में जाएं, जबल अख्तर में जाएं, and then you see ओमान में I shared another very interesting point and resort with you. It's we like 2 to 3 hours mountains में है, बहुत ऊपर जाके. अब they have developed a lot of hotels उसके इर्द गिर्द में, लेकिन initially वो बहुत बड़े बड़े great canyons थे, ठीक है. अगर आप उसको I'll share some videos with you more, some pictures as well. They are beautiful, magnificent mountain range, right? So वहाँ पे there's a little bit history about it कि वहाँ पे Prince Charles और Princess Diana they landed there for some time out from their visits और उससे थोड़ा निकल के, और they just took some time out in Omani nature. And at that point in time that place was not इतनी बड़ी commercialized नहीं थी because बहुत पुरानी है, and they landed with their helicopter in that place and they spent good 1 day over there. And now that spot must be like tourist attraction. Yes, no, it's a very big tourist attraction, and I must say Humma, the sunset watching at that place is a unique experience.
Awesome. I'm Believe gonna me, add it to my go places you list. should. You Uh-huh. should. You should, because once I will recommend you the best time to visit that place would be like near mid-winter, so that जब sunset हो and you can go and watch, spend that time वहाँ पे बिल्कुल edge That's पे. Oman, right? That's Oman. Okay. बिल्कुल आप, और जबल अख्तर उस का नाम है जगह का, वहाँ पे अलीला और एक Uh-huh. रिसॉर्ट है. सो आप वहाँ पे जाएं अनंतारा में, और very beautiful, I must say, कि peace, beauty, and spell, you'll find it. And if Awesome. you are a rock climber, आपको वहाँ पे opportunity मिलेगी. You can go down, आप उन canyons में नीचे जा सकते हैं. I'll share some pictures as well with you. Okay. There are small villages as well जहाँ पुरानी ओमानी लाइफ, जो लोग वहाँ पे माउंटेन्स में किस तरह रहते थे उनके हाल. There's 4 or 5 small villages जो आपको हाइक करके जाना पड़ता है और एक्सप्लोर करना पड़ता है. But they were preserved here, कि people are still living there? No, nobody is living there anymore. Oh. Old 4 or 5 small villages. Uh-huh. तो जब ये ध्याना पॉइंट के बैक पे ही देखेंगे आप, I will just send you those pictures as well. It's also very lovely place to go and must visit. And if you go there, then go and hike. We're gonna do that. We're gonna do that, inshallah. So, honey, anything you want to change about your life? Well, no, I'm so happy. I want to make it continue as it is, and maybe it can be better. I You don't want to change anything about it. That is wow. That I'm is so like, happy. I'm very happy. Thanks God. Thanks God. so the most embarrassing moment in life? Yes, when you get lost in your own city. And this is the most embarrassing moment. And when you get caught in your own wedding, and because you end up in a very horrible accident, और आप शादी पे बैठे हुए हैं और आपको पता है सामने वो अंकल खड़े हैं जिनको आपने गाड़ी मारी थी. So that was the most embarrassing moment. Oh, so tell us more about that. That seems very interesting. अच्छा, मेरी शादी थी and I was so excited, to be very honest. I just wanted to go in. और मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे तैयार करके अंदर बिठा दिया है और सब शादी है, मैं नहीं जा पा रही हूँ. I have to go in, So I was just standing across the door और अपने भाई को इशारा करके come in, मुझे लेके जाओ, तुम लोग मुझे बुला नहीं रहे हो. और मेरे अब्बू और सास आपस में आप जनाब में, पहले आप में मेरा टाइम वेस्ट. Anyways, when I entered, और जब स्टेज पे जाने लगी और बिल्कुल सामने मैंने देखा एक अंकल खड़े हैं, एंड ही वाज द लाइक हस्बैंड ऑफ मटिया कौर, बेसिकली माय हस्बैंड. सो मेरे अबारी के सामने बहुत बुरा क्रैश हुआ उनके साथ, और मैं 2 मिनट के लिए रुक गई. ओह माय गॉड, ये तो वही अंकल हैं जिनको बहुत जोर से मैंने गाड़ी मारी थी पीछे से, और मेरी गाड़ी टोटली. That's fine. I'll edit it out. So मेरी गाड़ी उनकी टोटली स्मैश हो गई थी, बट ही वाज सो नाइस. ही अरेंज्ड अपने लिए भी वो प्लम्बर और मेरे लिए भी, और बट उनको देख के थोड़ा सा मैं फिर, that was the most embarrassing moment for me. Okay. The most embarrassing was when I get lost in my own city, because Lahore में आप पैदा हुए बड़े, और you own that city in your own way, You're absolutely right. Yeah. There's something very unique about Lahore. I mean, आप एकदम वहाँ पे होते तो you believe कि you. It's your part. Yeah. It's your part. You own your own city in your own unique way. And मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है. वो सड़कें भी मेरी है, वो नहर भी मेरी है, और तो खैर एनीवेज वहाँ पे जब मैं 5 साल बाद गई तो आई वाज गोइंग टू माय सिस्टर्स होम, और आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट, गाड़ी निकाल ली तो मैं तो चली जाऊंगी, मुझे पता है हु कैन स्टॉप मी. और वहाँ पे टोटली चेंज था सब कुछ, वो नया मोटरवे. Which year was it? It was 2014-15, I guess. Okay, I can relate because the same thing happened to me. It was like totally a different Lahore. Exactly. आप सोचे हम डिफेंस से निकल रहे हैं और कैंची से आगे मुझे उसने एकदम लिंक कर दिया वो ब्रिज पे, और ब्रिज से सीधा मैं तो पुराने तरीके से माइंड मैपिंग हुई थी मेरी के यहाँ से यूं जाऊंगी मॉडल टाउन से अंदर और यूं और घर में पहुंच जाऊंगी. और when I took my car on that bridge, and bridge took me I don't know where. Oh my god, and I get this middle of nowhere, और I just started crying in a way कि यार ये मेरा ही शहर है, और मुझे दुख इस बात का नहीं था कि मैं रास्ता घूम गई हूँ, मुझे इस बात है कि मैं अपने ही शहर में नहीं हूँ यार. This is something very embarrassing for me to accept,
you know. Yeah, I आप get अपने शहर में ही जैसे आप middle of nowhere में खड़े हैं और एकदम it. सारा canvas change हो जाए आपके आसपास. Ha But ha ha. it was remarkable change. It really made me impressed as well. That's I definitely got awesome. some. Yeah. So your speed dial. The My number. speed dial, yes. My daughters, so I have to keep her instructing all the time. My security person and my husband. Okay, that's awesome. These three people are always on my speed dial. It was like really nice talking to you, Amna, and like going on this ride with you, knowing more about Saudi culture and Oman and Dubai. It was like I've been to Dubai, but never been to Oman and never been to Saudi. So I will welcome you whenever you come to Dubai. Come, we'll explore it more. We'll explore its nightlife. that We'll is super awesome. explore its hangout hall, beauty of the city as well. Perfect. So, We're gonna make a plan now. definitely, I'll be Talking to looking you. forward. Thank you so much. Yeah, and I hope viewers you enjoyed this segment. I really enjoy talking to Amna. Thank you so much, Humma. बहुत Lovely, शुक्रिया. honey. Lovely. Take Lovely. care. So talk to you guys next time, inshallah. So have a super awesome All right. rest of the week. Next week, inshallah. Allah Hafiz.